गाइस, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतली. हांवें ना हॉलाची ना थोडे अरेंजमेंट चेंज केला. आयज काल केल्ले, काल हांवें व्हिडिओ केला ना, काल आमी रेस्ट घेतलें. सो तुमकां आयज दाखयता कशें खंय खंय अरेंजमेंट केलें तें. ना हिंग सोफा आसलो कळ्ळें, ती काडलो आनी सोफा हा पळय हिंग दवरला. हे एक पार्सल येयला तें तुमकां दाखयता. आनी थिंग हा देवा दवरपाक केला कळ्ळें. तें काम पयलीं बेडरुमाक केलें. ओके, ते काडून मागीर हिंग दवरलें तें आतां. सो आतां म्हाका फुल्ली स्पेस आसा तो ओपन मेळ्ळो आनी हो स्पेस थोडोसो भरलो. हॉल जो आसा ना खूब खाल दिसता. पळोवया आनी कितें एड जावपाक शकता थिंगा. थोडीशी इंडोर जी प्लांट्स आसा न्ही ती हाडून हांव लावपाक शकता हिंगा. पळोवया कशें जाता तें. आनी तुमकां आतां हांव पार्सल दाखयता कितें हाडलें तें पार्सलाक. तुम्ही म्हणटले म्हाका डेली म्हाका दिसलें तुमी एड्रेस दिसता म्हण ह्या सायडच्यान ह्या सायडच्यान आसा म्हणून कोणाक कळपाक जायना एड्रेस कळ्ळें. तुमी म्हणटली हांव डेली पार्सल ओपन करता, पूण कितें पार्सल कित्याक ओपन करपाक पडटा, बिकॉज आमी शिफ्ट जालाय न्हू. सो नीव कितें कितें हाड रावता तेच खातीर ती पार्सलां डेली येतली. आतां खंयच्या अशें ओपन करपाचें, अशें ओपन करपाक आसतलें. अशें ओपन करूया. ओपन करा. सो हितून भितर आसा सेम टायपची जार्स. ओके, पळया ही जी आसा न्हू ही 600 ml. ओके, आनी ती हांवें पयलीं हाडलेली पळय ती 1000 ml. ही बी म्हाका 600 ml 6 जार्स आसाय न्हू, इतली 6 आहाय पळया. ती सुद्दां म्हाका 4 जार्स आसाय न्हू, ती तुमकां हांवें सांगलें 600 पडली म्हणून, पण 600 ती 500. पण सेम कंपनी. पयशे दिसता हितून भितर कितें सालां बी तसली घालपाचें बारकेले च्या पावडर घालून दिवपाक शकता तसली ती. ओके, ह्या म्हयन्याचो पार्सलाचो कोटा जो आसा न्हू तो सोंपलो गेलो. नेक्स्ट म्हयन्या पळया कितें हाडटा तें. आनी घर म्हयन्याचें आसतलें न्हू, मे बी चडान चड करून घर सजोवपाक आसतलें. कितें इल्लें बारकेलें करून ना घर सजयता हांवें. आयचें जें पार्सल आसा न्हू तें फर्स्ट पार्सल मागयलें ह्या एड्रेसाचेर डिलिव्हरी करपा आयलो बरो तो हिंगचोच. सो तेका खबर आहा रस्तो. आनी लास्ट टायम जे डिलिव्हरी करपा आयलो बरा तो केप्यां साकून हिंगा येयल्लो. ओके, सो ते केप्यां साकून हिंगा येयलो म्हणून तेका खबर आहा रस्ते खंय खंय आसा ते. पार्सल जो आसा न्हू तो सारकी एड्रेसाचेर पावला. ह्या एड्रेसाचेर आयज पार्सलाचें इनॉग्रेशन जालें. म्हाका खबर ना तुमी थिंग पावस पडटा काय कितें, पूण आमी थिंग न्हू अजिबात पावस पडना. एक्चुली न्यूजाचेर कितें येयल्लें 23rd साकून रेड अलर्ट म्हूण अशें वाचलें हांवें वाचलें त्या प्रमाणे. ओके, पूण रेड अलर्टान खंय पावस पडना हिंगा. A few moments later. आतां धुवपा वचपा म्हूण हांवें सगळें जे ग्लास आहा न्हू प्लास्टीक बी काडलेली दाखयता तुमकां. प्लास्टीक बी काडलें तेंगेले कळ्ळें. आनी तेंच्यांनी म्हाजे कडेन धोका केलो. दाखयता कितें केलें तें. हें ना कोण तरी यूज केलें दिसता पयलें. हें पळय हालता हें आसा ना भितरलें आवाज येता तुमकां हालता. सपोज हांवें तें घेतलें आतां न्हू जाल्यार हितूंतलो वारो वचून मागीर भितर घातलें सगळें पाड जातलें. सगळें हालता. आनी खंय तरी आसलो दाखयता. हे पळय हें आसा पळय हेजी बी हालता. 3 हितून भितरची जार्स आसा न्हू तेजे हालता. आनी एक दाखयता तुमकां
हेजे ना कितले पड लागले आसा. आतां तो पयल्या सारकें कळटा की भितरल्यान न्हू पयलें न्हू सारकें हितू भितर कितना लागले आहा भितरल्यान. अशें दिसता कोण तरी यूज केल्ले 2-3 दिसां खातीर आनी मागीर तेणें तें रिटर्न केलें अशें. हांव बी आतां रिटर्न करता, रिटर्नाक घालता तें. पळोवया मागीर ना मागीर ग्लास ना फेल जाला. हांवें त्याच कंपनी कडल्यान हाडले म्हणून बारकेची जार्स आसा ना ती दिवपाक ते फेल जाले. आनी दाखयता तुमकां. पळोवया कितें पळय सगळें तुटून भायर सरता पळय. आनी सारकें आतां ह्यो बी भायर सरता कळ्ळें. हें पळय अशें केल्यार भायर सरता. प्लस तेंगे तो ग्लास लायलो पळय तो बी भायर सरता. एक्चुअली न्हू कशें आसपा जाय धापलां हें घातलां पळय हें आसा पळय हें व्हायट कलर ताका तें चिकटोवपा जाय. अशें चिकटवल्यार तो भायर जो वारो आसता भितर वचना पूण हें सगळें हालता. आनी हें आसा पळय कशें घालता बीन गॅप उरता पळय धापलें म्हणटकीर तितलेंच हें दिसता तुमकां. हय ह्या पार्टान मात चेपलें आसा. आतां तेजी म्हाका रिटर्न पॉलिसी 1 आठवड्या नंतर आसा कळ्ळें. सेम तेका कोणी घेतले त्या मनशाची तशी आसतली. रिटर्न पॉलिसी 1 आठवड्या नंतर आसतली पळय. अशी बँड केली म्हणटा हें सगळें भायर पडटा पळय. सामकी लूज आसा सारकें पळय. अशें हालयलें म्हणटकीर पळय अशें हालयलें म्हणटकीर तितलो आवाज येता. भायर पडलें पळय हालयलें म्हणटकीर. आतां तुमकां पयलीं बरें ओपन खुशीन ओपन करून दाखयलें. आनी जेन्ना धुवपा वयता तेन्ना हें पळय अशें जालें. एनिवेज आतां तें रिटर्न करता तें घेवन बसपाचें ना. हय अशें पळय मातशें कशें जालें तुगे स्कूल. आयज कितले दिसांनी स्कुलाक गेलो तूं. कितले दिसांनी स्कुलाक गेलो तूं. दिसना तूं कसो आसा मागीर कशें जालें मागीर तेंका थोड्यांक खबर आसता हांव खंय वयतालो तसो कितें खबर आसता मागीर. ती व्हिडिओ असले क्वेश्चन जर विचारता न्ही भुरग्यांक मागीर मातसो हुस्को आसा ना तुगे. नाजाल्यार थोड्यांक पडून गेले ना न्ही तूं केन्ना यो केन्ना वच जाल्यार भुरग्यांक पडलें उरता. बरें आसा. इतना टाइम 9:30 जाले आनी आफ्टरनून हांव ना मम्मीगेर वचून येयलें. आनीक उसके बाद मैंने क्या किया कुछ नहीं. अभी हमारे बेडरूम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा है. मैच से फुर्सत ही नहीं मिलती. डेली T20 के वर्ल्ड कप के मैचेस होता रहता है और उससे मेरा ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है. पहले वो जार्स का प्रॉब्लम आ गया और उसके बाद मेरे हेल्थ को लेकर क्योंकि मेरी वेट फिर से बढ़ चुकी है 2 किलो. हाँ ना मेरा थोड़ा एक्सरसाइज कम हुआ है इसी वजह से. तो सोच रही हूँ कल से एक्सरसाइज शुरू करो तो थोड़ा कम वेट होगा. मेरा ही नहीं बढ़ा है महादेव का भी बढ़ चुका है. उसका भी 2 किलो बढ़ा है. हमने यहाँ पे आके ना बहुत खाया है इसी वजह से. लास्ट मंथ लास्ट टूर से आने के बाद ना हमने कुछ भी एक्सरसाइज ठीक से नहीं किए. आने के बाद ना मेरा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होता है. मैं बस खाना बनाती हूँ और घर पे रहती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ. एक चक्कर लगता है मेरा मम्मी के घर पे कोई बस ना उसकी वजह से टेंशन हो रही है. और मैं कैसे कम करूँ. एक्सरसाइज किया तो हो जाएगा. चलो कल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और कम करते हैं अपना वेट. तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. हाँ मुझे बताइए आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड वाला था और ऐसा आपको हर व्लॉग जो है ना वो खुशी वाला नहीं मिलेगा. कभी कभी सैड व्लॉग्स भी देख लेना मेरा कि ज़िंदगी इसी का नाम है कभी खुशी कभी गम. तो चलते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय. अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना.